Welcome you all once again to this amazing session where we discuss very important tables in different subjects. Our subject for today is radiology. Our topic for today is radiation exposure. अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं. एक्सीडेंटली रेडिएशन जो होता है हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, हम ये सब जानते हैं, वी ऑल नो इट, बट वो कितना लिमिट के पार जाएगा जब हमारी बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा. से फॉर एग्जांपल आप गए और एक्सीडेंटली आप रेडिएशन में एक्सपोज हो गए, ठीक है, तो क्या आपकी बॉडी के सेल्स डाई होने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. सो योर बॉडी विल बी अफेक्टेड और द सेल्स और सर्टेन टिश्यूज विल बी अफेक्टेड if the radiation goes beyond certain limits. So in this table we have discussed two main components. One person are the occupational exposure person, the other person are the general public. Occupation exposure, this persons are already working in the radiology department, the technicians, the doctors, the staff which is associated and daily coming in contact with the radiation, and the other is the general public. So first, the whole body, the limit of the whole body, if the whole body of the person, if it is exposed to a radiation exposure, the occupational exposure limit is 20 millisieverts for 5 years and 30 millisieverts in 1 year. Okay, for general public it is 1 millisievert per year. I hope that is clear. If the lens of eye has to be affected, the occupational exposed person, the limit is 150 millisieverts per year, and for the general public it is 15 millisieverts. So now अब skin, hand and foot. So for the skin and hand and foot, the maximum permissible dose of the radiation is 500 millisieverts per year for the occupation person, and just remove that zero, it will be 50 millisieverts. We will again revise. Whole body 20 millisieverts for 5 years and 30 millisieverts per year for the occupational person, but it is 1 millisievert for the general public. Lens of the eye for the occupational person 150 millisieverts. General public, remove the zero, it is 15 millisieverts. Now skin, hand and foot 500 millisieverts per year, but for the general public it is 50 millisieverts. Now very important, pregnancy 1 millisievert is overall accepted, but now maximum permissible is 5 millisieverts. Okay, now permitted is 1 millisievert, maximum should be 5, but it should not be going beyond 0.5. So just remember these three, should not go beyond 0.5 per month. If it goes 1 millisievert per year, then also it is the highest exposure, but maximum permissible is 5 millisievert. I hope it is clear. Moving on to another interesting topic, radiosensitive cells and radiosensitive tumors. तो पहले दोस्तों हम सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट्स पढ़ेंगे, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्यूमर्स होंगे वही उसके रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर भी होंगे. तो एक ही सेक्शन में हमने दो चीजें ले ली, रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स एंड रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स. ओके, सेल विच इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव इज लिम्फोसाइट. अब लिम्फोसाइट का कैंसर कौन सा आपको याद आता है? हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. टिश्यू के बारे में बात करते हैं. मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज बोन मैरो. बोन मैरो से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कैंसर कौन से याद आते हैं? इविंग सार्कोमा एंड स्पाइनल मेटास्टेसिस. Okay, so Hodgkin, non-Hodgkin lymphoma, Ewing spinal mets are radiosensitive tumors because their cells are also radiosensitive. Okay, cell types which are rapidly dividing cells, seen in gonads, seen in head, neck, face, seen in the genitourinary tract, also seen in the reproductive tract. Hence their cancers, seminoma, dysgerminoma, head neck tumors, oral cavity tumor, cervix tumor, uterus tumor and vaginal tumor are radiosensitive tumors. Ocular structure, most radiosensitive is lens, and in the retinal layer it is rods. Okay, now radio resistant tumors के बारे में बात कर लेते हैं. रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर्स होते हैं जो कितना भी रेडिएशन दें उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, बट लेटली इफेक्ट आता है. तो सेल्स जो हैं वो है प्लेटलेट्स. टिश्यूज जो हैं वो है नर्वस टिश्यू, क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग नहीं होते, एक बार बन जाते हैं. सेल टाइप इज पोस्ट माइटोटिक सेल. ऊपर हमने क्या पढ़ा था? रैपिडली डिवाइडिंग सेल, जिनमें फटाफट माइटोसिस हो रहा है, अभी अभी डिवाइड हो रहा है. रेडियो रेजिस्टेंस कौन से हैं? जो डिवाइड नहीं हो रहा है, पोस्ट माइटोटिक सेल. ठीक है.
ऑक्यूलर स्ट्रक्चर, स्क्लेरा इज मोस्ट रेजिस्टेंट। कुछ कैंसर्स जो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि डीपली प्लेस्ड होते हैं, जैसे कोलॉन डीपली प्लेस्ड है बॉडी में, पैनक्रियास अंदर की तरफ है, किडनी अंदर की तरफ है, सार्कोमा सॉफ्ट टिश्यू के वो अंदर है, ब्रेन क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग नहीं है नर्वस टिश्यू इसलिए ग्लायोमा एंड मल्टीपल माइलोमा। We have to remember all these things. These are very, very important as far as exams are concerned. But who gave us this law that rapidly dividing cells are most radiosensitive and radioresistant? I am waiting for your comments in the comment section below. Before we proceed ahead, please like, share and subscribe to our channel. We are bringing more and more informative videos like this. Also, we have compiled many more important tables so that it becomes easy. We have done a comprehensive compiled approach to make it easy for you. Now, having said that, we learned about today radiosensitive cells and tumors, radioresistant cells and tumors, but one question is still left. Which phase of the cell cycle is more radioresistant? Which phase of the cell cycle is more radiosensitive and resistant? So radiosensitive cycle is G2M. Radioresistant cell cycle is phase S. Okay, again I will repeat. Radiosensitive, sensitive कौन होते हैं? General managers. So G2M is radiosensitive phase of the cell cycle and radio resistant कौन होते हैं? जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तो S phase। ठीक है, please try to focus on these points. We are surely bringing you more informative videos like this. We will have a subscription plan separate. Details will be given to you very shortly. We are bringing you the most informative, unique and comprehensive content. Please stay here. Thank you so much.